Namaste bachcho. Today I am here with the next topic of your chapter polynomial, and we are studying about factorization. So this is the factorization of a quadratic trinomial. So polynomials we are going to study about the factorization of quadratic trinomials, that is a polynomials of the form x square plus bx plus c. Okay, how to factorize it we will learn today, and we will see some examples based on it. So to factorize this polynomial we find two integers p and q such that p plus q such that their sum is equal to the coefficient of x, that is b. Their sum should be equal to b, and their product, the product of these two integers should be equal to c. मतलब इस b, ये हम लोग दो ऐसा इंटीजर ढूंढेंगे जिसको जोड़ने पे इस b के बराबर आए, मतलब b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर आए, और जिसका प्रोडक्ट इस कांस्टेंट टर्म के बराबर आए. तो p प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू b एंड पी क्यू शुड बी इक्वल टू c. तो अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एट द प्लेस ऑफ b we will put p plus q because p plus q is equal to b. So p plus qx plus at the place of c we have to write pq. So it will be pq, then x square plus multiply it, px multiplied px will be here, and plus q multiplied by x will be qx, and plus pq is here. Now in these two terms x is common, so x, take x as common. In these two terms x is common, so x, after taking x common we have to divide x square by x, then x will left in bracket, and this px when divided by x, x will cancel with x, p will left here, and plus sign is there between, so put plus sign, and then after plus sign is here. Now take, you can see q is common in these two terms, so take q as common and then put bracket, and then divide first terms, that is qx by q, then q will cancel with q, x will left here, and plus sign is there, so put plus sign, and now pq is divided by q, then q will cancel with q, p will left, so put p here and close the bracket. Now x plus p and x plus p is common in these two terms, so this x plus p will cancel with this x plus p, then x will left, then put it in bracket x, and plus sign is here, so put plus sign, and x plus p will cancel with this x plus p, then what will left, q, so put q and close the bracket. So factorization of this type of quadratic trinomial will be equal to x plus p and x plus q. This is the factorization of this type of trinomials. Let us see one example based on it. To clarify, let us see one example based on it. So we are going to take one example based on it. Suppose we have given a quadratic trinomial x square plus 9x plus 18. You have to factorize it. तो इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करना है, इस b को, ये क्या है, ये b है, b इज इक्वल टू 9 है और c इज इक्वल टू 18 है. ठीक है, तो हमको इस दो इंटीजर फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड टू इंटीजर्स सच दैट देयर सम इज इक्वल टू 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 18, एंड यू हैव टू आल्सो कीप द साइन इन माइंड. साइन को भी ध्यान में रखना है. तो इसके लिए सीधा सा उपाय है. क्या उपाय है, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको
फैक्टराइज करेंगे 18 को जो है या फैक्टर लिखते हैं, 18 का फैक्टर लिखेंगे 1 इंटू 18 होगा। दो तरीके से कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन से या फैक्टर निकाल के। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 से कटेगा, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। 18 को 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 18 कैन बी रिटेन एज 1 इंटू 18, 18 कैन बी रिटेन एज 2 इंटू 9, 18 कैन बी रिटेन एज 3 इंटू 6. Now when 1 plus 18 is added, so it will be equal to 19, but 9 is here, so this will not be applicable here. Now 2 into 9 will be 18, but 2 plus 9 will be equal to 11, which is not applicable here because 9 is here. So their sum should be equal to 9. वैसा दो इंटीजर लेना है जिसका सम क्या हो, इसके बराबर आए, और प्रोडक्ट 18 के बराबर आए। तो यहाँ प्रोडक्ट तो 18 के बराबर आ जाएगा, बट इसको जब जोड़ेंगे तो ये 1 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 18, 1 प्लस 18 जो है हो जाएगा 19। हमको यहाँ क्या चाहिए, 9 चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ 2 इंटू 9 18 तो आ जाएगा, प्रोडक्ट 18 आ जाएगा, बट 2 प्लस 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, 9 चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और 3 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब दिस फैक्टर्स आर एप्लीकेबल, दिस टू इंटीजर्स विल बी एप्लीकेबल हियर। ओके, सो दिस कैन बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर प्लस, this is your p and this is your q. So you have to write it in the form of p plus q into x, that is 3 plus 6 into x and plus 3 into 6, p into q. This is your p and this is your q. This is your p and this is your q. So it will be x square plus, now multiply it, 3 multiplied by x will be 3x, 6 multiplied by x will be 6x, and plus 3 multiplied by 6 will be here. Now divide it into two parts and see what is common in this first part. X is common, so take x as common, then what will left here, x, and plus this x will be cancelled with this x, then 3 will left. Now close the bracket and put the sign, plus is here, so put plus sign. And now in these two you can see 6 and 6 is common, so take 6 as common and put the bracket. After taking the common you have to put the bracket. Then 6x when divided by this 6, it will be equal to what will left here, x. This 6 will cancel with this 6, and then x will left, so put x here, and after this plus sign is here, so put plus sign. And now you have to divide this term by 6, then 6 will cancel with 6, what will left, 3 will left, so put 3 here and close the bracket. Now you can see x plus 3 and x plus 3 is common, so take x plus 3 as common, then what will left in this first term, x plus 3 will cancel with, put the bracket, and x plus 3 will cancel with this x plus 3, then x will left, so put x, and after this plus sign is here, so put plus, and this x plus 3 will cancel with this x plus 3, what will left, 6 will left. So this is your factorization. This is in the form x plus p and x plus q. We have just factorized the standard form of the quadratic trinomial, and we have got the factorization x plus p and x plus q. So this is the value of p and this is the value of q. So in this type of polynomial, if you have to factorize it, you have to just find the factors of the constant term, that is c, and choose two numbers whose sum is equal to the coefficient of x and product is equal to this constant term. Okay,
Now let us see some more problem. Now let us factorize x square plus 5x minus 24. Okay, then here your c is, that is constant term is minus 24. You have to keep the sign always in mind. Okay, साइन जो है अगर माइनस है तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो माइनस 24 हो गया, ये c का वैल्यू माइनस 24। अब इससे हमको इसके फैक्टर से दो वैल्यू निकालना है, दो नंबर्स चुनना, दो इंटीजर फाइंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे, ठीक है, या जोड़ने पे ऐड करने पे क्या है 5 है, प्लस 5 है, इसके पहले क्या है प्लस है, प्लस साइन इज हियर, तो प्लस 5 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पे हमको माइनस 24 के बराबर आना चाहिए, माइनस 24 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 24 है, ठीक है। तो 24 को जो है 24 को का पहले फैक्टर निकालते हैं, क्यों साइन को अभी इग्नोर करते हैं, 24 का फैक्टर्स लिखते हैं, 1 इंटू 24, ठीक है। 24 कैन बी रिटेन एज 2 इंटू 12, 24 कैन बी रिटेन एज 3 इंटू 8, ओके। 24 ऑल्सो कैन बी रिटेन एज 4 इंटू 6। अब ये हो गया, इसके आगे नहीं हो सकता। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। तो हमें दो को चुनना है, इसलिए दो के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखेंगे, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। अब इसको माइनस प्लस भी लगा के अगर करेंगे, जैसे 1 हुआ और 24 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, या 1 में से 24 माइनस एक प्लस एक माइनस करेंगे तो माइनस 23 आएगा। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए। तो फिर जो है इसको देखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 12 करेंगे तो 14 आएगा, हमको 5 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 2 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10 आएगा, या माइनस 2 प्लस 12 करेंगे तो प्लस 10 आएगा। हमको क्या चाहिए, प्लस 5 चाहिए सम, और प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा 24, ठीक है। तो फिर तीसरा देखेंगे, तीसरा है तुम्हारा 3 एंड 8, तो 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, ओके। 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5, हमें क्या चाहिए यहाँ पे प्लस 5, ये आ रहा है माइनस 5, ठीक है। तब 3 और 3 माइनस 8 को माइनस किए, अब माइनस 3 करेंगे, अब प्लस 8 करेंगे, तब क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। प्लस ज़्यादा है तो 8 में माइनस 3 विल बी इक्वल टू 5, ओके। तो ये जो है ये हमको आ गया प्लस, इसका इन दोनों इंटीजर्स का सम कितना आया 5 आया, माइनस 3 या प्लस 8 इज इक्वल टू आ गया 5, और माइनस 3 और इंटू 8 करेंगे तो माइनस अब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 3 8 जा 24, इसका प्रोडक्ट आ गया माइनस 24 और सम आ गया प्लस 5। तो प्रोडक्ट हमको माइनस 24 चाहिए था क्योंकि यहाँ पे माइनस 24 है, और सम जो है आ गया, सम आ गया। तो ये जो है इंटीजर्स हमने फाइंड कर लिया, दो इंटीजर्स जिसका सम इसके बराबर हो और प्रोडक्ट इसके बराबर हो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे उस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस ये सब, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने चुना था उसको लिखेंगे, ठीक है। माइनस 3 था हमारा, माइनस 3 और प्लस 8 इज इक्वल टू 5, एंड माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 24। ये हमने दो इंटीजर चुना, एक माइनस 3 और एक 8, ठीक है। इसका सम 5 हो गया इसके बराबर, और इसका प्रोडक्ट इसके बराबर हो गया माइनस 24 के बराबर। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस तो ऑलरेडी कोई भी नंबर लिखेंगे केवल 24 लिखेंगे तो उसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस का साइन देना है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस राइट इट इन
this form, x plus minus 3 plus 8 into x minus 24. Okay, p plus q into x and plus minus is here, so it will be written as 3 into 8, or you can write this number also 24, right here 24. Now multiply it, plus minus will be minus, 3 multiplied by x will be 3x, and plus multiplied will plus 8 multiplied by x will be 8x, and minus 24. So it will be, in these two terms x is common, so take x as common. What will left here? X, minus sign is there, put minus sign, and x will cancel with x, 3 will left, so put 3 and close the bracket. Plus sign is there after, so put plus sign. Now take 8 is, you can see 8 is common in these two terms because 8 is the SCF of 8 and 24. So take 8 as SCF. Now 8x when divided by 8 will be cancelled, x will left, so put x here, and minus sign is there, so put minus sign, and 24 divided by 8 will be cancelled, 24 will be cancelled by 8 in 3 times, so put 3 and close the bracket. Now x plus minus 3, x minus 3 will be common, so take x minus 3 as common and then put the bracket and divide first term by x minus 3, then x minus 3 will be cancelled with x minus 3, x will left, so put x here, and after this you have to put plus sign because plus sign is here, and then divide second term by x minus 3, then this x minus 3 will be cancelled by this x minus 3, and what will left here? 8 will left. Now close the bracket. This is your factorization for this polynomial. Okay, so in this way you can factorize. Let us see one more question, one more trinomial. We will factorize one more quadratic trinomial, x square minus 4x minus 21. Now see here, your c is minus 21. Minus 21. From this you have to choose two numbers, two integers whose product is minus 21 and sum is equal to what is here? See, minus sign is also here. So sum should be equal to minus 4. If plus is here, then there is nothing to worry. But if minus is here, then you have to be careful. Okay, so minus sign is here, so their sum, that you have to choose two integers whose sum should be equal to minus 4 and product should be equal to minus 21. Now let us factorize 21. 21 can be written as 1 into 21. 21 can be written as 3 multiplied by 7. These are the factors. Only 4 factors are there of 21. 1, 3, 7 and 21. Now if we add 1 plus 21, we will get 22, which will not be applicable because minus 4 we needed here. Now if we add minus 1 plus 21, then we will get plus 20, which is not will be applicable. Minus 1, sorry, plus 1 and minus 21 will be equal to minus 20, which also not be applicable. Now take this, 3 plus 7 will be equal to 10, which not will be applicable because we need minus 4 here. Now minus 3 plus 7 will be equal to plus 4 because plus is greater, so plus 4 will be here. Here we need minus 4. Then put 3 minus 7, which is equal to minus 4, and 3 multiplied by minus 7 will be equal to plus minus minus, and 3 7s are 21. So these are two integers we have to apply here. It will be applicable. 3 multiplied by minus 7 will be minus 21 and 3 minus 7 will be equal to minus 4. Okay, so 3 minus 7 will be equal to minus 4. We have got here.
we need minus 4 and their product should be equal to this minus 21. So we have got this also. So both condition is to be satisfied by these two integers. Then we will use these two integers in factorization. Otherwise it will not be applicable. Okay, so we have got minus 3, first integer is minus 3 and first integer is plus 3 and second integer is minus 7 here. So it can be written as x square and minus sign is here. So you put plus sign, x square plus p plus q. At the place of p you have to write 3. You have to write 3, and at the place of q you have to write minus 7, and x will be here, and write here minus 21. The number whatever is given here you have to write here. Now multiply it. Plus multiplied by plus 3 will be plus 3, and multiplied by x will be x, and plus multiplied by minus 7 will be minus 7, and multiplied by x will be 7x and minus 21. Now divide it into two parts. So in these two parts x will common, x plus 3 will left here and minus 7. Then what will left? If we are taking minus sign as common, then the sign will 7x when multiplied by 7 will be cancelled, x will left, so put x, and this minus is to be multiplied with this minus, it will be plus, and 21 divided by 7 will be 3, so put 3 and close the bracket. Now x plus 3 will be common, then put the bracket, x plus 3 will be cancelled with x plus 3, x will left here, so put x, and minus 7 will left in second term. So this is the factorization for the given polynomial.